Hi, I'm Pawan from Kausalya classes. Today we are going to discuss Introduction to Physics. What is physics? The nature around us is colorful and diverse. It contains phenomena of large varieties. The wind, the sand, the water, the planet, the rainbow, heating of object on rubbing, the function of human body, and the energy coming from sun and nucleus. There are a large number of objects and events taking place around us. So what is physics? Physics is the study of nature and its law. Study of nature and its laws. Laws are the rules governed by the nature. We cannot interrupt those rules. We can only frame the definitions, and definition is anything. Any scientist can frame the definition. Orbiting of the moon around the earth, falling an apple from the tree, the tides in a sea, on a full moon night can all be explained if we know the Newton's law of gravitation and Newton's laws of motion. Physics is a pure science and it's real. It's real. No one has given the authority to frame the rule of physics because it is operated by the nature. We only discovered the rules that are operating nature. Aryabhat, Newton, Einstein, Feynman are the great physicists because from the observation available at that time, they could guess the frame and the law of physics which explain these observations in a convincing way. But there can be now there can be a new phenomena any day, and if the rule discovered by these great physicists or scientists are not able to explain the new discovered phenomena, no one will hesitate to change the rule. Friend of mathematics is, or you can say, friend of physics is mathematics. Why is it so? Because mathematics is a language, and with the help of this language, explanation of physics will become very easy. How? Let's say the gravitational force between the two masses is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance apart. Instead of saying all these lines, you should simply write F is equal to G m1 m2 upon r square. So maths is a very condensed language through which you can minimize or condense the number of line which is going to use to convince a particular idea. So maths is a language of physics. Without the knowledge of mathematics, it would be much more difficult to discover, understand and explain the nature of law. Okay, so the next topic is unit. Unit. Physics describes the law of nature. We all know. This description is quantitative and involves measurement and comparison of physical quantity. To measure a physical quantity, we need a standard unit of that quantity. Otherwise, different people will use the different unit and it will not be a standard unit and people will not understand how much that quantity is. So measurement of a quantity is mentioned in two parts. The first part give how many times the standard unit, and the second part give the name of the unit. Let us suppose I am saying I usually study 2 hours. 2 hours. What it means? These two numerical 2 give the information that 2 times the basic unit. Here the unit is R. So first we should define what is 1 hour, and I am studying 2 times of that 1 hour. This is what the meaning. Now the question is, who is responsible? Who is going to decide unit? Who decides units? And the name is CGPM. Conference General des Poets at Measures
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसको सिंपल तरीके से समझना चाहोगे इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स in English has given the authority to decide the unit by international agreement. अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं होगा भैया तो बाकी कंट्रीज बोल देंगे हाँ बनाओ जो मर्जी बनाना है, हम नहीं मान रहे. नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज. हैंडराइटिंग पे मत जाना भाई, बहुत खराब है. If the unit of length is defined, a unit of area is automatically obtained. क्यों भाई? क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ ही तो होता है, L1 इंटू L2. अगर ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा? L1 इंटू L2. तो अगर आप इसका यूनिट डिफाइन कर दे, लेट अस सपोज मीटर, सो एरिया का यूनिट अपने आप पता चल जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर. गॉट इट? सो sorry, a set of fundamental quantities are as follows. First, fundamental quantities should be independent of each other. It should be independent. And second, all other quantity may be expressed in terms of fundamental quantity. In terms of fundamental quantities. Yes, we know that we are having 7 fundamental quantity with the name of length, mass. Length unit is meter, symbol is m, mass kg, time second, electric current ampere, temperature Kelvin, luminous intensity candela, amount of substance mole. And we already know the definition of each of them. Meter, meter क्या है? Light 1/29979245 सेकेंड में जितनी दूर चली जाती है उसको 1 मीटर कहते हैं. किलो क्या? एक प्लेटिनम इरिडियम का एक अलॉय रखा हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में. कहाँ रखा हुआ है? रखा हुआ किसी अच्छी जगह पे. इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखा हुआ है और उसको हम लोग 1 kg कहते हैं. सेकंड क्या है? सेकंड का डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. सेकंड के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि सीजियम जो है, सीजियम एक एलिमेंट है, सीजियम 133. Cesium 133 atom emits electromagnetic radiation of several wavelengths. A particular radiation is selected which corresponds to a transition between two hyperfine labels of ground state of cesium 133. Each radiation has a time period of repetition of certain characteristics. The time duration in 19196317770 time period of the selected transition is defined as 1 second. मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया, फिर कभी डिस्कस करेंगे, इतना जरूरी भी नहीं है. एम्पियर क्या होता है? 2 पैरेलल का करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस हम 1 मीटर का रख लें और ये एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से अट्रैक्ट करने लगे तो हम बोल देंगे इन वायर्स में फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर का है. टेम्परेचर का क्या कहानी है? ये तो केल्विन होता है यूनिट, ये एक फ्रैक्शन होता है 1/273.16. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं, ये 1 केल्विन के बराबर होता है. 1 मोल क्या होता है? 1 मोल तो बहुत आसान है डिफाइन करना, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम होते हैं वो एवोगेड्रो नंबर के आसपास होते हैं, 6.022 × 10⁻23. इसी को हम 1 मोल कहते हैं. इन सारी कहानियों के बाद 2 सप्लीमेंट्री हमारे पास यूनिट भी हैं. एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, जो एक प्लेन में होते हैं, है ना. ये 2 रेज हैं, लेट अस सपोज ये एक रे है OA और ये एक रे है OB. OB OA से
थीटा डिग्री पे डिफ्लेक्टेड है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसको मेजर करते हैं रेडियन में। रेडियन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। और वहीं पे सॉलिड एंगल होता है कोन, आइसक्रीम कोन की तरह समझ लो। आइसक्रीम कोन में अगर नीचे से तोड़ के अगर देखोगे तो आइसक्रीम दिखेगी, और इस आइसक्रीम के ये 3 डायमेंशनल जो स्पेस है इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। स्टे रेडियन से मेजर करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका एसआर है। सो बस आज के लिए इतना ही था। आगे मुझे आपको ये बताना था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो उनको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। उनको बड़ा और छोटा करने के पीछे एक जबरदस्त रीजन है, एंड रीजन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वेरी ओवर wide range. Wide range. We talk about the separation between two protons inside the nucleus. Also we discuss about the mass of electron, that is 10 to the power minus, order of mass of electron is 10 to the power minus 31 kg, right? And the mass of galaxy, if you're talking about, the order will be around 10 to the power 41 kg, right? So if you want to increase or decrease the fundamental quantity, you should use these SI prefixes. If you will increase the order, the value will increase, and the name is like deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, xi, jeta, iota, है ना। अगर छोटा करना है मतलब डेसी, डेसी का क्या मतलब है, लेट अस सपोज मीटर है, 1 मीटर है, इसको 10 से डिवाइड कर दिए तो उसका एक टुकड़ा क्या होगा, उसका एक पीस, छोटू सा पीस, वो होगा 1 डेसीमीटर, राइट। सो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जिप्टो, यैक्टो, योक्टो। सो ये सारी चीजें रट लो, काम आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।